are our experts who are there with us in the studio. I'm Gitanjali Soni and with me is Adesh Gupta. And Adesh, we have? हमारे दो विशेष खास मेहमान पूर्व क्रिकेटर वेंकट सुंदरम और वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्णा स्वामी, स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार। और आज की रात तो बहुत मुश्किल से कटेगी क्योंकि कल हैं भारत और पाकिस्तान आमने सामने। लेकिन स्वामी, क्या आपको लगता है अफगानिस्तान ने भी डंका बजा दिया है? देखिए, ऐसा है कि कहने के लिए अफ़गानिस्तान मिनोज है, मगर आप जो है इनके दोनों खिलाड़ियों को देखेंगे, गुरबाज को और ज़ाज़ाई को, मेरा ख़्याल काफ़ी अनुभवी हैं, क्योंकि वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए ही नहीं, तमाम टीमों के लिए खेलते हैं। कितनी सारी लीग्स होती हैं आजकल एशिया में, ख़ास करके बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो या फिर यूएई हो या फिर अफ़गानिस्तान में ही हो। उनके अलावा इनके खिलाड़ी जो हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह खेलते हैं, काउंटीज़ के लिए खेलते हैं। मेरा ख्याल शायद हमारे क्रिकेटर से ज़्यादा बिजी हैं, तो अनुभव की इनमें कमी नहीं है। और इन्होंने दिखाया जिस प्रकार से ज़ाज़ाई ने और गुरबाज ने। आपको एक ज़ाज़ाई की खासियत बताऊं, इनका जो है T20 में सबसे बड़ा स्कोर का जो है कीर्तिमान भी इन्हीं का है। 162 रन। वो बने कहाँ थे? देहरादून में। Wow, thank you for sharing this. आयरलैंड के साथ खेले थे, देहरादून में बनाए थे। Wow, thank you for क्योंकि this. देहरादून किसी ज़माने में प्रैक्टिस का केंद्र भी था अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए। तो और वेंकट सुंदरम तो बहुत अच्छी तरह जानते अच्छा, हैं। इन्होंने 6 छक्के भी मारे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लगातार अफगान लीग में। जी बिल्कुल। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिवियाज हमारे लिसनर्स को पता चलते रहेंगे जब इतने दिग्गज स्टूडियो में हो ना, जिसमें आदेश भी बहुत बड़े दिग्गज हैं, आप सभी जानते हैं। वो खाली एंकर ही नहीं है, आप बहुत कम सारी नहीं चीजें। है, आप कम नहीं है। मैं तो अभी भी और स्टूडेंट हूँ वेंकट गेम सुंदरम की। जी का तो कहना क्या, क्योंकि इन्होंने बहुत नज़दीक से अफगानिस्तान की टीम को खेलते देखा है। तो गीतांजलि जी, जरा कुछ इनसे भी एक्सपीरियंस सुन जी लिया जाए। बिल्कुल। उससे पहले हम अपने लिसनर्स को भी बोल दें, वो बहुत ही बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। हमारे इससे पहले वाले शो में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे। 23421084, 23421085 हमारे नंबर है। तरीका वही है, 011 लगाएं अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या फिर दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं। तो वेंकट जी, आपने तो काफ़ी नज़दीक से देखा है नोएडा में अफगानिस्तान की तैयारी को। और आप देखिए कि देखते देखते किस तरह से चुनौती पेश कर रहे हैं वो सभी टीमों के लिए। नहीं, इनमें देखिए, जब मैं एक आपको एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। तो एक छुट्टी का दिन था, तो ये मेरे पास आए, क्योंकि मैं सचिव था वहाँ पे ग्राउंड सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का। तो ये आए और कहने लगे हम कल प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आइए खेलिए। हम कोई प्रैक्टिस क्रिकेट खेलना है तो मैं कभी मना थोड़ी करूँगा। तो वो मैंने सोचा 2-3 घंटे के लिए आएंगे, तो मैंने अपने स्टाफ को बोला भैया ज़रा देख लेना, इनके लिए जो पानी वानी जो है, वो ग्राउंड पिच वगैरह जो भी करना है, बॉल वॉल जो भी देना, आप इनको हेल्प कर दो। ये सुबह 9 बजे और 7 बजे शाम को गए। जी, जज्बा और इतना भूख और प्यास मैंने किसी में नहीं देखा है क्रिकेट के लिए। तो अभी जो देख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस टाइम ये आए थे और ग्रेटर नोएडा में इन्होंने अपना होम बेस लगाया था। और कोई नहीं जानता था रशीद खान को, ने उनका नाम किसी को मालूम ही नहीं था। अब तो बहुत बड़े प्लेयर हो गए ये लोग। जी जी। क्योंकि अब अनुभव हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे आ गए। और इससे पहले कि हम playing चर्चा nation हो गए। जारी रखें, सीधे चलते हैं और सुनते हैं कि अफगानी प्लेयर्स क्या कह रहे हैं। प्लान करके निकले थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह विनिंग के लिए जैसे हमारे बॉलर ने बॉल की, फ़रूकी ने, मुजीब ने, नबी ने, राशिद ने, तो सुपर था। और टारगेट 106 जो हमारे बैटिंग लाइनअप था, उसके हिसाब से हम निकले थे, जो जल्दी चेस करेंगे जो नेक्स्ट राउंड के लिए रन रेट अच्छा रहेगा इसलिए। तो जाजा साहब, एक बात बताइए, जब आप रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ खेलते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अटैकिंग है, तो बहुत कम बार देखने को ऐसे मिलता है कि दोनों तरफ से तगड़ा अटैक चल रहा है, यानी बॉलर्स की बहुत उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी प्लान होता है या ऐसे ही हो जाता है? नहीं, हमारा और गुरबस का अंडरस्टैंडिंग चल रहा है। जैसे वो अटैक कर रहा था, उसका शॉट अच्छा लग रहा, तो मैं उसको मौका दे रहा था कि उसके बल्ले पे बॉल आ रहा है, तो उसी हिसाब से हम चल रहे थे। क्या लगता है टीम पहुंच जाएगी फाइनल में आपकी? इंशाल्लाह, जैसे टीम का बैलेंस है, अच्छी बॉलिंग है, बैटिंग की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, तो इंशाल्लाह फाइनल तक हम कोशिश करेंगे। वेल प्लेड और कॉन्ग्रेचुलेशन आज के विन के लिए और टूर्नामेंट के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। All right, so a lot of happiness, lot of confidence. You can see it's quite evident that Afghanistan is going to be really big, very, very confident, like in coming tournament. So
Again, Swami, I'll ask you, name the players which you really feel from, now forget about Afghanistan and Sri Lanka only, even from our Indian and Pakistani team, which are going to come forward and really make name for themselves. I mean, there are six teams, and each of the six teams has got about 15 to 16 players. So there's about 100 players. And the nature of this game is that anyone on the given day, can actually do what the Afghans today showed. If you've got 15 players, 11 playing members, not everybody has to be a match winner every day. If 3 or 4 of your players can win a match on a given day, today there were contributions from the bowlers, as I just said. I mean, there was Mujib, there was Rashid. Farooqi took 3 wickets. But the fact is, Rashid gave away only 12 runs in 4 overs. So it was a complementary effect. And then when you look at the batsmen, Gurbaz and Zazai, the way they played, these are 2 highly experienced players. They played everywhere. Maybe they are not in the same league as Virat Kohli or a Rohit Sharma or a KL Rahul. That's also because the media goes for them. India has a legacy of cricket. Pakistan has a legacy of cricket, Australia, England, another team. Afghanistan also now is a test team. Now they have, fair amount. Look at them from 10 years from now. And as Venkat just said, that they have such, kind of hunger. I think, look at it, maybe we'll have to look at them, say, maybe in 10 years' time or 20 years' time. After all, India started playing cricket in 1932. So, international cricket. So, we've come a long way from there. And 90 Venkat, in years. all fairness, I think Afghanistan and Sri Lankans, let's just not put them in that list, but Afghanistan haven't really got much of exposure with a good teams to play. So I guess, whatever they are playing, that is still quite decent. No, they're now playing regularly. They're a test playing nation. They're playing against other test teams. They're playing bilateral tours. They were recently on a tour. They went to Ireland again. And But they're not playing against like big teams. see, the big teams are also busy. Yeah. You see, the calendar is so full. You take the Indian team has been playing continuously for the last 6 months. So there's hardly any time to fit in a tour. Right. But it will happen. And their performances like this will open eyes. And, I can see them playing at Lord's one day, Wow. a test match. That's not far off. Swami wants to say something. Yeah. What Venkat just said, absolutely, it's, I mean, maybe they'll play at Lord's, maybe they'll bigger. So a platform like this is very, very crucial for them. This is Asia Cup where there is India, which is certainly the biggest money-making cricket team in the world. I mean, any Indian cricketer, if he's there in a tournament, I mean, automatically it becomes big time. It becomes a high-profile thing. So in this tournament, with India there and Pakistan there, and also to some extent Bangladesh there, this tournament becomes very high-profile. And because of that, Afghanistan stands to gain. And once these players become heroes or stars, then there will be television channels wanting to broadcast Afghanistan's cricket. And that's where their money will come. And that money is plowed back into their cricket. And that's how cricket will grow in their country also. All right. So our money, our treasures are our callers. So हमारे साथ callers जुड़ गए हैं already. आदेश? जी उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। जी सर, मैं राजू चौधरी बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ नगर, यूपी, उत्तर प्रदेश से। जी, क्या कहेंगे मैच को लेकर? सर, मैच के लिए जो आज मैच हुआ उसमें मजा नहीं आया। क्यों? अफगानिस्तानी खिलाड़ियों ने दिल जीत लिया। दिल जीत लिया सर, लेकिन मैच ऐसा नहीं होना चाहिए। मैच होना चाहिए दोनों तरफा काटे का मैच होना चाहिए। जी जरूर। कोई सवाल आपके मन में? सर, हमारा ये सवाल है कि ये कल का जो भारत पाकिस्तान से जो मैच है जी उसमें कल रोहित शर्मा शतक मारेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। जी, और और एक लिसनर और है। हेलो हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार मैम, मैं राकेश कुमार बात कर रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी राकेश जी, बहुत स्वागत। कहिए क्या कहना चाहते हैं? जी, आपके ऑल इंडिया रेडियो की कमेंट्री तो पहले बहुत लाजवाब है मैम, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं ऑल इंडिया रेडियो की पूरी बहुत टीम को। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम कि भारत और पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर को क्यों नहीं लिया गया है? जी, हमारे जी एक्सपर्ट देखिए, मोहम्मद बताएंगे। आमिर तो काफ़ी समय से बाहर हैं और बहुत से रीजंस भी हैं। खैर वेंकट, अब अफ़गानिस्तान और जहाँ तक बांग्लादेश के मुकाबले की बात है, तो ये तो मुकाबला ऐसा था कि जो श्रीलंका का मुकाबला था और जो अफ़गानिस्तान की टीम है ऐसा लगता है कि काफ़ी आगे जाएगी। लेकिन लाख टक्के का सवाल, कल जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगी तो क्या दिल का हाल होगा?
क्योंकि पिछले जो 2020 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो भारत उन यादों को भूलकर आगे बढ़ना चाहेगा। देखिए वो जो बात आप कह रहे हो कि पुरानी बातें हैं, वो उसको तो भूल जाओ, उसका कोई अहमियत नहीं है अभी। आज आपको सोचना है कल क्या करना और कल क्या होगा। जी। उसको वो जो पुरानी बातें हैं कि भैया वो हार गए, अब हमें जीतना है। 1975 में पहली बार विश्व कप का आयोजन हुआ और पिछले साल अब जबकि जो क्रिकेट है वो इतना आगे निकल गई है कि टेस्ट चैंपियनशिप है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, 20 ओवर का वर्ल्ड कप है, 15 मुकाबले यानी कि 13 बार पाकिस्तान ने हार खाई विश्व कप के किसी मुकाबले में, यानी किसी भी प्रारूप में, जी। और एक मुकाबला वो जीते हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा बात तो जरूर होगी नहीं पाकिस्तान के पास? वो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि दोनों टीम जो है, आप देखिए ना कि इनका बिल्डअप क्या है। दोनों टीम का पेपर में देखिए, देर क्वालिटी प्लेयर्स हैं दोनों साइड में। पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, रिजवान है, बाबर आजम है। नहीं बाबर आजम तो चलो वो तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें और भी प्लेयर, अजमतुल्ला है, वो अजहर अली है, दे आर ऑल गुड प्लेयर्स, देर क्वालिटी प्लेयर्स। And especially when we talk about a और pitch like this. Pitch, I think tomorrow it will be slightly different, is what I Okay. expect, because this is a bit bowler friendly. हाँ. Though Afghanistan did not seem to think it is bowler friendly, they batted in their own way. Yeah. But I mean, the dice rolls, everything went their way today. उनका दिन था आज। बट मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान मैच में टेंशन अलग होते हैं, उसमें टेंशन ज़्यादा होता है, और therefore how you handle that pressure, that decides who's going to win. And always, Swami, when we talk about our Indian team, so it's always like, batsman centric in the sense that everybody would like to see them really hitting sixes and, playing really, especially the top order. Now, especially the man who's in question here is Virat Kohli. Obviously, he's coming after a long rest, we would say, and he's not in that much of form right now. So do you think that could be a cause of concern, or probably he would just overcome that? Certainly, I mean, when your premier batsman, one of your best batsmen all time, I mean, is actually not in good form, he's not being able to get runs, you always feel bad because you know what he's capable, you've seen what he's capable of. So, I mean, obviously, we all wish that he can get the runs that he actually is capable of getting and winning matches for India. Unfortunately, it's not been happening for a bit right now. So that does cause a lot of concern. This is the ideal platform. I mean, from here, if he can take off and do well, that augurs very well for Indian cricket team at the World Cup in Australia. So yes, of course. But again, as I told you before the program, every cricketer goes through one lean patch. And probably this is him. और बात होगी हमारे श्रोताओं से भी, लेकिन फिलहाल सीधे चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। Emirates Cricket Board and all other government organizations and authorities and all those who were involved in the smooth conduct of this match. The Asian Cricket Council would also like to thank all their sponsors, starting with DP World, the title sponsors, Ease My Trip, Diageo, Hero, Dream 11, Gold Medal, Heritage, Amul, and Skoda. Our presentation party for tonight got to introduce Mr. Harshit Tomar on behalf of easemytrip.com. He's present with us. Welcome. And we've got Mr. Nabil Kayad as well, Director People and General Administration, DP World. Right, first up, the Sri Lankan captain, Dasun Shanaka, please. Well, hard luck, Dasun. Just the first question is, would your life had been easier had you maybe bowled first on this kind of a pitch? See, there are two ways of thinking about that. First, I think as international batsman, we should bat any kind of wickets that we get in the tournament. It would have been lot more easier when it comes to bowling. See the two youngsters, so it's a debut that they made. So I think they could have bowled particularly well if they have bowled in the first place. Yes, and obviously, when you look at your bowling attack, spin is your great strength. You've got some terrific spinners there. Nothing in the pitch for the spinners tonight. Yeah, there was a little bit of grass covering the wicket, so I think it was not very much helpful. The wicket was for them, but still, they are two world-class spinners. Anywhere they bowl, they should execute well for us, I think.
And you would think that one-off game that every team has, that one bad night is out of the way now tonight? Yeah, I think so. See, T20 cricket always can happen these kind of things. Best is if we can jump out from this situation and win the next game and qualify for the next phase of the tournament. All the best for that match. Thank you. Dasun. Thank you. Thank you. That was the Sri Lankan captain, Dasun Shanaka. Next up, I'm going to invite Mr. Harshit Tomar on behalf of easemytrip.com to give a catch of the match winner with a check of USD 3,000, and the award goes to Raimanullah Gurbaz. Mr. Harshit Tomar presenting that check of USD 3,000 to the catch of the match, Raimanullah Gurbaz. Next up, I'm going to ask the captain, Mohammad Nabi, to sign the match ball, and it will be handed over to him by Mr. Nabil Kayed. He'll sign it and hand it over to Mr. Nabil Kayed. That's Mohammad Nabi, the winning captain for tonight. And after that, I'm going to invite Nabi to have a quick chat with us. Well, has there been a better game than this? Tell me honestly, you've played a lot of T20 internationals. This has to be one of your best performances ever. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thanks to my dear Allah that we won that game, and the boys played really well, especially the fast bowler, the Faruqi, who started the first over. When we decided to bowl first, watch the pitch, and it's all worked there. And did you tell your young seam bowlers to use the pitch and not try too much of the T20 stuff? Yeah, just discuss in the meeting that we bowl a line and length, and if we get the swing and get the wickets, then we take on the batsman there to get more wickets in the power plays. And we thought we saw the best of Afghanistan with their bowling, but the batting, I mean, your two openers were sensational. Yeah, they played really well and give confidence start to the team. That the morale of the team is high. Hopefully we do well in the next game as well. And that's for sure. All the best for those matches, and well done tonight. Yeah, thank you. So that was Mohammad Nabi, the captain of Afghanistan. Our final presentation will be, of course, the player of the match. So I'm going to invite Mr. Nabil Kayed, Director, People and General Administration for DP World, to present a check of USD 5,000 and a trophy to Fazal Haq Faruqi. What a brilliant performance tonight by this young fast bowler. He saw it all. So Fazal Haq Faruqi, our player of the match, and we're going to have a quick chat with him. We'll need some assistance with Faruqi. We've got somebody to help us to cross the barrier of language. Well done. Ye to aap samajh payenge. So well done. Tell us about the pitch and what he was thinking when he saw the pitch this afternoon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pa awal sar ki khotole hewadwal ta daghe bariya mubaraki wayma. Pitch barak ki zawam no awal sar ki no mag khpalam da planu che awal zada try wakum chinu bal ki khpal team la para khat break through kam khe wicket wakhlam no alhamdulillah mag ki za kamyab suma wicket wasta. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to congratulate of this win, to the entire nation. That's like a big win for us. And about the pitch, was my plan was, to make the breakthrough for my team, and that was like the simple plan for me. That was so. He had a couple of overs to begin with, did really well, but then had to wait a long time for his next over. But that didn't seem to deter him because he was back to his best. اول سر کې ما ټرای دای چې نو موبایل استعمال کوم نو بیا سي خپل ټیم ته د حالات ته پکاتو سره نو خپل زدا کوشش کوم چې بیا کوم ډېر کیس کوم اوري دي نو هغه د نسبتا لکه څومره سکیل ما سره پاګه ډاډم نو ټیم لپاره کوشش کوم چې اخر کې بیا دوه اوري وکم. So with the new ball, I'm trying to bowl like good deliveries, and breakthroughs. So that's like my plan, So and then I can also bowl, at the dead overs, with the Yorkers and slower deliveries. So I'm like comfortable with both, and that's fine with me. Really impressed. We enjoyed your performance. Well done, and all the best for the rest of the tournament. Thank you. Thanks for your help as well. So the news is Fazal Haq Faruqi, player of the match and our hero of 2020, and rightly so. I'm sure that the team is going to be very, very happy. But are we happy about it? Well, our experts, who's going to take that? So Venkatji? Oh, a terrific performance. Brilliant performance.
he's so level-headed. He says, I have no problem bowling at the start of the innings. I keep it simple. I want to break through. And if you get me in at the end overs, then I'll come in with Yorkers and I know how to bowl in the end overs. So this is the type of player, this is the youngster with fire in his belly who wants to perform on the international stage and make a name for himself. Fazal Haq Faruqi. Remember the name? Yes. Because I think he's going to make some difference for this team, and in this tournament, he'll stand up as a shining star of the future. For sure. जी स्वामी 11 रन देकर 3 विकेट, और ये कोई आसान नहीं होता, सुनने में मेडन बहुत ओवर, अच्छा एक जी, मेडन ओवर। बहुत शानदार स्पेल। बिल्कुल, मेडन ओवर भी था, तो यानी कि रन भी नहीं दिए, और जो 2 शुरू में जो ब्रेक थ्रू उन्होंने जो किए, वो मेरा ख़्याल है कि बहुत ही अहम जो है अहमियत रखते हैं, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई अफ़गानिस्तान की जो है इस पूरे मैच में, और उनके बल्लेबाजों ने भी ये दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं। जी, और हमारे कॉलर्स भी लगातार बताते रहते हैं हम किसी से कम नहीं, और उनके दम को हम कतई कम नहीं आंक सकते। कॉलर हैं हमारे साथ ऑलरेडी। हेलो हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार कहिए, कैसा लगा आपको आज का खेल? जी बहुत बढ़िया जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं स्टूडियो में। जी मैं जमशेदपुर झारखंड से श्यामू महतो बोल रहा हूँ। जी महतो जी। जी आपकी आकाशवाणी की कमेंट्री बहुत अच्छा आ रहा है, और मैं वापसी किया कमेंट्री एशिया कप में, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। शुक्रिया शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे? मेरा तकरीबन 3 सवाल है। जी। सवाल है कि फिलहाल आज के मैचों में अफगानिस्तान की टीम ने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और सवाल है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रीलंका की टीम ऐसा मैंने इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों हुआ उनका, और लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय टीम कल पहले बैटिंग करना ठीक रहेगा या फील्डिंग करना ठीक रहेगा, इसकी बात चर्चा करें। थैंक यू। थैंक यू जी वेंकट साहब, यहाँ चर्चा जारी रखेंगे, आपसे सवालों के जवाब पूछेंगे, लेकिन पहले एक लिसनर को और सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से। जी, बहुत दूर से आपका फ़ोन लगा है, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। जी पूछिए। आज मैंने पहली बार फोन किया, पहली बार लग गया। क्या बात है। आज बहुत सारी फर्स्ट कॉलर्स आए हैं ना जी आदेश? बिल्कुल। तो मेरा सवाल है कि विराट कोहली को इस सीरीज खेलने से पहले जिम्बाब्वे के साथ एक मौका देना चाहिए था, तो वो अच्छा खेल सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन के लिए। तो यहाँ पर वेंकट जी 2 सवाल हैं कि श्रीलंका की टीम क्यों बिखर गई, और दूसरा ये कि विराट कोहली क्या जिम्बाब्वे दौरे पर उन्हें खिलाया जाना चाहिए था। तो मैं तो समझता हूँ कि जो श्रीलंका का टीम का परफॉर्मेंस था सर्टेनली बिलो पार था, क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट शायद कर दिए थे शुरू में, या प्रेशर में आ गए थे। ये दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो प्रेशर में आ गए क्योंकि 3 विकेट उन्होंने 10 बॉल में 3 विकेट गए उनके टॉप प्लेयर्स के, और बॉलिंग वाज एक्यूरेट, अच्छा बॉलिंग किया उन्होंने अफगानिस्तान ने, फास्ट बॉलर्स ने। लेकिन जब आपके 3 रन पे 3 विकेट आउट हो जाएं तो फिर आप अंडर प्रेशर आ जाते हो, चाहे कोई भी 20 ओवर्स मैच हो या जितना भी जैसे भी मैच हो, जिस भी फॉर्मेट का। हाँ, तो उसके बाद वो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान हावी हो गए इन पे, उनको चलने नहीं दिया, और इसीलिए चाहे वो बैटिंग हो फील्डिंग हो किसी भी, कंप्लीटली आउटप्ले कर दिया और मैच जीत गए आराम से। And Swami, another question they have that definitely that depends on whether India wins the toss tomorrow. So should they be batting first or bowling first? Oh, certainly. They will be chasing. There's no question about that. Because I think here on this kind of a wicket, I think all teams would prefer to chase. And we know why we saw that. Chasing is always because these are wickets, these wickets are going to be used multiple times. And as they keep wearing out, I think they will be, kind of more unpredictable. We don't know, what kind of watering has been done, etc. Whether they are dry. They looked, the pace bowlers actually got a lot of purchase on that. And the spinners, of course, they didn't actually need to, kind of make a lot of effort. Of course, Rashid, I'm sorry, I should give credit to Rashid the way he bowled, and even Mujib. Both of them actually took advantage whenever they were given the ball. They actually held the one end held up. They held up one end, and they really kind of stemmed the flow of runs. There was no flow of runs, but I think overall the Afghan bowling was like superb, and then their batsmen, as I said before,
they complemented it. Well, a lot of new things we are going to see during this tournament. But right now, I have to say, Venkat sir, it's always such a pleasure that you always grace our studio, and we are always very, very thankful for that. And thank you, Swami, And hopefully for your Virat Kohli- knowledge, for your wisdom, for your hopefully guidance. Hopefully Virat Kohli will get a 50 at least in this 100th match tomorrow. With everyone's wishes and blessings, we all are hoping that Virat, I'm not saying he's less on confidence because he's always very confident. He looks very confident, but yeah, whatever is stopping him, that just gets cleared off. And thank you, Adesh. आपसे तो कितनी सारी चीज़ें मैं जब भी स्टूडियो में बैठती हूँ नहीं सुनने को मिलती हैं बहुत मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ और नए किस्सों और बिल्कुल ताज़ा अपडेट, स्कोर, डिस्कस सभी चीज़ों के साथ हम कल होंगे भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के साथ, और समय रहेगा वही। बिल्कुल। और फिलहाल के लिए आप अपनी गीतांजलि सोनी, आदेश, हमारे एक्सपर्ट्स सबको इजाज़त दीजिए स्टूडियो से। और आपने हमारे साथ इतनी खूबसूरती से समय बिताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल आवर एक्सपर्ट्स एंड आवर टीम। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हीरो ऑफ द 2020 इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद। अभी आप पुरुषों के एशिया कप T20 2022 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच पर विशेष कार्यक्रम